Question number 30. The following distribution shows the daily pocket allowances of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency F. Yanode missing frequency F ya F ni value ara baita ko calculate kanak drangen digimna mean kon so ha beton so na 18 mean rongjok 18 yanode mean ni merak pa formula ko sakalgena direct method ni formula ko sakalgen skang bo megi sigena yanon so ha daily pocket allowance in rupees aro kesara frequency solution de megi sigena we prepare the table as follows. Sekarang boleh class interval. Class interval. Ini jangan ada frequency. Frequency kita pangnan Fi ini sirunga. Ini zaman udah frequency ini zaman udah class marks. Class marks ya udah xi ini sirunga. Ini zaman udah product. Product udah fi into xi ini sirunga. Class interval de sekarang bawah 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25. Frequency there sekarang bawah 7, 6, 9, 13, F, 5, 4. Class marks there. Class marks ko ramai ke calculate karna. 11 plus 13 kabo 1 plus 3 de 4, 1 plus 1 de 2, 24. तो दे मैं कहना यह गिगनी को प्लस का नहीं जमानो दे 2 को 2 ची डिवाइड करना है 11 plus 13 का वाले बताऊंगा ना 24 24 इको ना 2 ची डिवाइड करना है तो दे 24 को 2 ची डिवाइड करना है बेटा टाइम्स होंगे 12 टाइम्स इन्हीं में प्लस मार्क्स तो बेटा ना 12 ऑप्शन अगेन इको पर कैलकुलेट करो 13 plus 15 का होंगे 28 28 को 2 ची डिवाइड करना है 14 15 plus 17 का होंगे बताऊंगा 5 plus 7 de 12 1 plus 1 de 2 plus 1 de 3 32 32 को 2 ची डिवाइड करना है 16 17 plus 19 का होंगे बताऊंगा 9 plus 1 de 6 10 10 plus 6 de 16 अच्छा 36 36 को 2 ची डिवाइड करना है 18 19 plus 21 का होंगे बताऊंगा 19 plus 1 de 20 20 plus 20 de 40 40 को 2 ची डिवाइड करना है 20 देवना बताऊँ उन्हों के 21 plus 23 का होंगे 44 44 को 2 ची डिवाइड का होंगे 22 देवना 23 plus 25 का होंगे बताऊँ उन्हों 5 plus 3 दे oh sorry 5 plus 3 दे 8 2 plus 2 दे 4 48 48 को 2 ची डिवाइड का होंगे 24 ने 24 से 24 24 23 plus 25 का होंगे 48 होंगे 48 को 2 ची डिवाइड का होंगे 24 तो ये प्रोडक्ट है fi into xi यान fi ये रहा xi गिगनी को मल्टीप्लाई करो 7 into 12 का होंगे बताऊंगा ना 84 6 into 14 का होगा बताऊंगा 84 9 into 16 का होंगे 144 तो 13 into 18 का होंगे 234 f into 20 दे 20 f मैंने f ने वैल्यू को मासी जाए इनमें 20 f से चाहिए 5 into 22 का होंगे 110
4 into 24 count de 96 to dia gama ko plus kabo fi xi aro fi gini ko plus kana nangen I know again total ye gama ko plus count de betong yana 44 plus f mana f ni value ko ma sijani man 44 plus f inoba f tung ba ko de plus kana manjawa f tung gi jag ba ko dingthang plus kabo temna ikode 20f ni ba be sedo naibo ye gama ko plus count de betonggen 752 plus 20 f. So the missing frequency, we calculate again. Given x bar minus mean. Mean beton sona question 18. Given x bar betona 18. So this implies today x bar ni formula mana direct method ni formula ko sakalbo. Direct method ni formula jok x bar is equal to summation of fi xi divided by summation of fi. So this is equal to 18. So this implies summation of fi xi betana 752 plus 20f. 752 plus 20f divided by summation of fi betana 44 plus f. 44 plus f. So this is equal to 18. And this implies you could have by donaibo kosakodongo bokode 752 plus 20f. This is equal to the equal multiply kabo cross multiply kabo kosak chirangbo 44 plus f into 18. Minimum 18 into 44 plus f. And this implies 752 plus 20f is equal to the 18 into 44 count de betong yana 792. Then sign the plus 18 into f there 18f. And this implies 20f ko jakashirun bo dimna 18f ko left side dona about there minus 18f. This is equal to 792 ko jakarun bo 752 ko jakrachir ans count de sign minus ongonok 752. And this implies 20f minus 18f de betong jok 2f. So this is equal to betong onok get 2 minus 2 de 0 9 minus 5 de 4 7 minus 7 is 0 and even 40 and again. So this implies f is equal to 40 devna 2 kama chi again. So 40 ko 2 chi divide count de 20. In even missing frequency f are betana 20.